Assalamu alaikum, dear students. This class 10th subject English. Today we are going to do the further questions, textual questions of the lesson Papa Cheese Math. You will open your book at page number 51. Today we are going to do the question number 2. Now, what is question number 2? I never want to this to happen again. He told his father. Ever. Who says it and why? I never want this to happen again, he told his father. Ever. किसने कहा ये? मैं ये कभी नहीं चाहता हूँ कि ऐसा हो, दोबारा ऐसा हो. इसने अपने बाप से कहा. Ever. कभी नहीं. Who says it and why? ये किसने कहा और क्यों कहा? किसने कहा? ये चाकू ने कहा. तो इसी का हमें आंसर देना है. जैसे आप देखिए, Papachi's son Chaku says it because when he saw his father beating Mamachi with the brass flower vase, so he warned him that it should not be happen again. पापाची का जो बेटा था चक्कू, जो कि एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था, जब उसने देखा कि उसका बाप उसकी माँ को पीटता है, मारता है फ्लावर वेस से, तो इसने उसको खबरदार किया कि आगे ऐसा नहीं होना चाहिए. So dear students, you will write this question in your notebook. Now there is question number 3. Amu told the twins that Mamachi was crying more because she was used to him than because she loved him. In the light of the statement of Mamachi's daughter, comment on the relationship between Mamachi and जो बेटी ने कहा इस ट्विन्स को कि ये जो जुड़वा भाई थे उनको कहा कि ममाची पापाची के फुंडल पर के मौत पर बहुत ही रो रही थी. She was used to because she was used to him then she loved him. वो इसकी आदी बन चुकी थी. ये नहीं कि then she loved him, यानी वो प्यार से ज़्यादा उसकी आदी बन चुकी थी. In the light of the statement Mamachi's daughter comment on the relationship between, तो इसके तनाजुर में हमें ये देखना है, वी हैव टू कमेंट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द ममाची एंड पापाची. उनके दरमियान कैसे ताल्लुकात थे. पापाची एंड ममाची वायर टिपिकल इंडियन हस्बैंड एंड वाइफ ऑफ ओल्डन डेज. जैसा कि आपने देखा है, वो इंडियन हस्बैंड और यानी हिंदुस्तानी औरत, हिंदुस्तानी शवहर और बीवी के जो कि पुराना ज़माना था, तो उसी टाइप के थे. द कपल नेवर शेयर लव. उन्होंने कभी आपस में प्यार नहीं बांटा. एज एन ओप्रेस्ड वुमन ममाची टॉलरेट हर हस्बैंड्स क्रूएलिटी पेशेंटली. तो ये जो औरत है, ये ममाची, तो उसने सब कुछ एज एन ओप्रेस्ड, जिस पर जुल्म किया गया था, तो वो सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, सब जुल्म बर्दाश्त कर रही थी. शी हैड बोर्न इट सो लॉन्ग दैट शी बिकेम यूज्ड टू इट. तो उसको ऐसा, इसने उसको ऐसे बर्दाश्त किया, वो इसकी आदी बन चुकी थी. शी एवर क्राइड एट हिज डेथ एंड नॉट बिकॉज शी लव्ड हिम. तो जब इसने उसके मायत पे रोया, इसलिए नहीं कि वो इससे प्यार कर रही थी, बल्कि वो इसकी आदी बन चुकी थी, वो आदत से मजबूर थी. बट बिकॉज शी हैड बिकम यूज्ड टू हिम, तो अब वो आदी हो चुकी थी. अब वो ये सोच रही थी अब मुझे कौन पीटेगा. सच वाज द रिलेशन बिटवीन देम. तो इस किस्म का ताल्लुकात इनमें था, इनके दरमियान था. नाउ देयर इज क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डज ममाची स्टैंड आउट एज एन इंडिपेंडेंट एंड रेजिलेंट वुमन इन द टेक्स्ट. ममाची कैसे एक बतौर एक आज़ाद और बतौर एक रेजिलेंट हियर मीन्स कि जो क्या करती है,
جو برداشت بھی کرتی ہے، جو اوپر بھی اٹھتی ہے، جو اپنا کام بھی کرتی ہے لیکن برداشت بھی کرتی ہے، کیسے ٹیکسٹ میں دکھایا گیا ہے. On one hand, she proved determined and self-confident woman as she started her own business of pickles on commercial scale. جب ہم ایک طرح سے دیکھیں گے تو وہ بہت ہی کانفیڈنٹ عورت لگ رہی تھی، کیونکہ اس نے کمرشل سکیل پہ تجارتی سطح پر اس پکل آچار کی تجارت شروع کی. اینڈ گاٹ نام اینڈ فیم اینڈ گیٹ نیم اینڈ فیم، اور اس نے نام کمایا. آن دا ادر ہینڈ ہی ٹالریٹ دا کریولٹی آف ہر ہسبینڈ، تو لیکن دوسری جانب سے اس نے اپنے شوہر کا ظلم بھی سہ لیا پیشنٹلی، اینڈ سی نیور پروٹیسٹڈ اوور اٹ. تو دوسری طرف سے اس نے کبھی اس پہ پروٹیسٹ نہیں کیا، احتجاج نہیں کیا، نہ اس کے خلاف بولا کبھی، اینڈ نیور پروٹیسٹ اوور اٹ، بلکہ سب چپ چاپ کر کے برداشت کیا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ وی ول کنٹینیو دا نیکسٹ کوشچن فرام ٹمارو. Thanks.